Good evening, everyone. Sir, it's not audible. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Grewal, sir. Good evening to everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir, Good evening, sir. Evening, ji. good evening, everyone. We've gathered here again for another session of
FAQs on the new assessment scheme by CBSE. We have here CA Dr. G.S. Grewal to answer our questions and to discuss the important topics or the queries that have come up from the teachers. We have Mr. R.K. Khosla, and we have Mr. Harvinder Singh and Mr. Gaurav Padia. So we'll all ensure and endeavor that we answer all your questions and we give the best possible inputs to your queries. We also would thank Sultan and Sons for organizing this webinar. And there's one important announcement that I would want to make. Sorry. There's one important announcement that I would like to make. Our teacher, respected teacher, Mr. Gaurav Padia, has received an award by Uni Apply in association with Times of India for the best accountancy teacher. We congratulate him on behalf of all of us here. And on behalf of everyone, we will present our back to you. All present. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Congratulations, sir. So let's begin with the session. I take the questions turn by turn that we have received already in the emails. You can also type your questions on the chat box and we'll take them up in the end of the session. So the first question that we have received, it says many topics are deleted, but they are still a part of the learning outcomes. How are we supposed to deal with such situations? So I'll request Grewal sir to answer this query and then we'll take it forward. Thank you, Rima. And I also welcome everyone onto this panel discussion. And हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सारी क्वेरीज जो हैं वो हम रिजॉल्व करें. अगर कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, नहीं कर पाए तो हम नेक्स्ट सेशन में पैनल डिस्कशन में हम जरूर करेंगे. सो रीमा ने पहला क्वेश्चन रखा, many topics are deleted but they are still part of the learning outcomes. How to deal with situation? देखिए, सिलेबस एक चीज है और लर्निंग आउटकम अलग चीज है. लर्निंग आउटकम इज व्हाट CBSE expects us to teach our students. तो लर्निंग आउटकम हमेशा सिलेबस से ज्यादा होगा. एक्स्ट्रा नॉलेज तो देनी चाहिए बच्चों को जितना हम दे सकें, पर ये ध्यान रखिए कि सिलेबस में से पेपर आएगा. क्वेश्चन पेपर जो सेट होगा वो सिलेबस में से होगा, not from the learning outcomes. So from the examination point of view, syllabus is important, but to give education, to give knowledge to the student, learning outcome is important. And this has been very clearly stated by CBSE also, that questions will be based on question paper design and syllabus. So sample question paper which has come, which we will discuss later, assumes tremendous importance in this current scenario. Thank you, Remo. Thank you, sir. Anybody else Gaurav like to sir add? wants to add something here. Thank you, Grewal sir, for this. The simple point is learning outcomes are there. See, why the syllabus has reduced. The syllabus has reduced just because of this pandemic. Earlier, it was a complete syllabus which we used to teach, like adjustment of capital was there, redemption of debentures was there. But now due to pandemic, the syllabus have reduced due to this time constraint. But CBSE is expecting us to teach those topics which are deleted. Just for sake of extra knowledge, it might be possible that those topics which are deleted, like adjustment of capital, redemption of debentures, they might be useful for the students in their higher studies. If they go for CA, they go for higher education like BCom or whatever they are going for, it might be required at that level. So that's why it must be taught. But as sir has said very correctly, that they should not be assessed. They won't be asked in the board exams, and neither we should ask in our internal exams. Thank you. Another point I want to make, circular CBSE issued circular 51, in which it very categorically stated that syllabus declared as on 31st March 2021 should be taught to the students. So we are expected to teach what the actual syllabus is, much beyond that. So just
continuing this question, that there are two terms, term 1 and term 2. What comes in term 1 will definitely not come in term 2. Is this correct? Is this understanding correct? Yes, CBSE has said that syllabus for term 1 will not be taken up in term 2. But yes, there are certain topics which are common. Like say goodwill valuation, although stated in fundamentals, but it will be used in retirement and death of a partner. So there are topics which are interrelated in term 1 and term 2. So those topics can come, they can be assessed. But yes, standalone, those topics will not be taken up in term 2. So term 2 में term 1 का जो syllabus है उसके question, उसमें से question नहीं पूछे जाएंगे. But जहाँ interrelated है, yes, पूछे जा सकते हैं थोड़ा बहुत. Thank you, sir. So next we'll ask Khosla sir. Sir, valuation of goodwill is not mentioned in the syllabus. Should it be discussed with the students? देखिए, जहां तक गुडविल का एक प्रश्न है, मेरी एक सोच जरूर है कि गुडविल पूरी पार्टनरशिप का आधार है. सही अर्थों में देखा जाए तो गुडविल के बगैर तो कहीं पार्टनरशिप को आगे एक्सप्लेन करना ही बड़ा मुश्किल है. और एक कंसेप्ट जिसके ऊपर बेस्ड है तो उसकी वैल्यूएशन क्यों नहीं है? वैल्यूएशन जरूर डिस्कस करनी चाहिए, बल्कि तीनों मेथडों के ऊपर करनी चाहिए. इसी के ऊपर देखिए ना, एक क्वेश्चन उसने पूछ लिया, पहला ही क्वेश्चन पूछ ले कि डैश इज नॉट रिक्वायर्ड while calculating the average profit, dash is required for the calculation of the super profit. अब मुद्दा तो एक ही है ना कि कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने वक्त तो जरूरी है, लेकिन जब हम सुपर प्रॉफिट की चर्चा करते हैं तो उसकी आवश्यकता है. तो वो तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है. क्वेश्चन तो आपका वहां पूरा होता ही नहीं है. अब यही कि एमसीक्यू के अंदर पूछ रहे कि गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, बड़ा सवाल है कि किसकी प्रेजेंट वैल्यू है? एवरेज प्रॉफिट की है, नॉर्मल प्रॉफिट की है, सुपर प्रॉफिट की है, या ऑल ऑफ देम की है? तो कहां नहीं इसकी जरूरत है. तो इनफैक्ट इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सुपर प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड सुपर प्रॉफिट. तो गुडविल के बगैर सही अर्थों में पार्टनरशिप की कल्पना करनी ही व्यर्थ है. गुडविल जब आप पार्टनरशिप के एडमिशन में करेंगे, अब देखिए वहां पे एक हम चर्चा करेंगे एक क्वेश्चन का, असर्शन और रीजन के अंदर हम चर्चा करेंगे. एक क्वेश्चन ऐसा जो एडमिशन की बेस बन जाएगा गुडविल के लिए, तो वो हम बताएंगे. शायद मैं पहले अगर कहूँ तो एक मिनट बोल देता हूँ. एक असर्शन, और हम हालांकि वहां पे डिटेल में डिस्कस करें, एक एग्जांपल दे रहा हूं. ये असर्शन और रीजन क्या है? दो स्टेटमेंट ही तो हैं, और इसके अलावा क्या चीज है? उसका निर्णय करना है कि ये दो स्टेटमेंट ठीक हैं, गलत हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं, दूसरा नहीं करते हैं. हरविंदर जी, जैसे आपको पता है, में जर्नली कहा जाता है गुडविल इज क्रेडिटेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. ये एक असर्शन में डाल दिया, कितना बढ़िया है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का लिए. आगे रीजन में रिवार्ड टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. कितना सुंदर तालमेल हो रहा है. तो गुडविल अगर आपने एडमिशन करानी है, ये नहीं बताएंगे तो कैसे होगा? तो भाई निश्चित रूप से इसकी वैल्यूएशन आप जरूर डिस्कस करें क्लास के अंदर, और इसके तीनों मेथडों का विस्तार पूर्वक चर्चा होनी चाहिए. और कई क्वेश्चन है पेपर के अंदर. What I feel is why we teachers are getting confused by this, that whether this valuation of goodwill is syllabus or not. In the curriculums which are being released by CBSE before this term wise, valuation of goodwill was given separately. Chapter 1 fundamentals, and then valuation of goodwill was given as a separate head. But if we go this term wise syllabus in detail, in depth, we will see the concept of valuation of goodwill under the fundamentals of partnership. So valuation of goodwill is very much a part of syllabus, and CBSE can definitely ask the question from our students. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Khosla.
So there are some queries that we've received from the teachers whether certain topics are in the syllabus for term 1 or not. So we'll take those topics or chapters one by one. So Harvinder sir, teachers have asked that in the chapter admission of a partner, capital adjustment and preparation of balance sheet is deleted. Should students still be taught these topics, and also can journal entries be asked for capital adjustment? Actually, Grewal sir and Gaurav sir have already discussed about that, whether capital adjustment is part of the syllabus or this topic is to be taught or not to be taught, and preparation of balance sheet. I would say that in learning outcomes, there is specifically mentioned that in case of admission of a partner, balance sheet is to be taught to the student as learning outcome. But definitely in exams, actually, as you know that in term 1 and specifically in term 1, only objective type questions will be coming. So no balance sheet will be required, but balance sheet must be taught to the students, and reason behind that is that they have to understand the complete concept. The topic of admission is not complete unless or until we tell students or teach students how assets and values are changed and how revised values are shown in the balance sheet. So it is better to teach preparation of balance sheet. कैपिटल एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है, एंड दैट मे बर्डन स्टूडेंट्स कि भी इसको एज ए टॉपिक प्रिपेयर करना है. तो टीचर्स के लिए सजेशन यही है कि उसको एज ए सिंपल टॉपिक एक बार एक्सप्लेन कर दे कि इसका टॉपिक का मीनिंग क्या है. तो इसके अलावा ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी भी टॉपिक्स हैं तो उसको भी अच्छे से वो प्रिपेयर करेंगे, एंड डेफिनेटली देयर विल बी नो क्वेश्चन रिलेटेड टू कैपिटल एडजस्टमेंट इन एग्जाम्स. और दूसरी बात जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो ये है कि जर्नल एंट्रीज में कम, जब कैपिटल एडजस्टमेंट देखा जाए दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, सो नो जर्नल एंट्री विल बी आस्क्ड इवन इन केस ऑफ MCQs क्वेश्चंस. तो उसका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा. Right. Thank you, sir. So our teacher, Mr. Sukhbir, has asked some more questions. Whether accounting of ESOPs is in syllabus, and whether revaluation, I'll take it one by one. Accounting of ESOPs is in syllabus. So Gaurav sir, would you take that up? As far as ESOP is concerned, only theoretical part is in syllabus. Any concept of ESOP must be discussed. And while we are teaching the concept of ESOPs, we can discuss the related terms with ESOPs, like vesting period, exercise period, exercise price, and that's it. No numericals should be discussed, or if at all discussed as an extra knowledge, as a part of learning outcomes, but should not be a part of assessment in our examination. Even CBSE will not ask any question from practical in ESOPs. Thank you. Very right. Harvinder sir. And Actually, numerical part of ESOP is not to be discussed. But I would say one thing that in case of part 2, that is actually analysis of financial statement book, there is first chapter, preparation of balance sheet, and there is one term which is shown under reserve and surplus, that is share option outstanding account. So that means this item may be asked in the exam, that under which head this item will be shown, and students will definitely ask what is the meaning of share option outstanding account. So in very brief, the meaning is to be mentioned while discussing the theoretical part of ESOP. Right, sir. Thank you, sir. Yes. अभी ये बात चर्चा में हो रही थी कि जो एक चीज सिलेबस का पार्ट नहीं है तो क्या उसकी डिस्कशन क्लास में होनी चाहिए. मैं अपने जितने टीचर साथी हैं, बड़े अनुभवी हैं, उनसे एक बात जरूर कहूंगा. ये अपना एक मेरा विचार है, हो सकता है ठीक है. आज का जो एक माहौल है उसके अंदर सही अर्थों में देखें तो हमें टीचर को स्टूडेंट्स के अंदर एक विश्वास को जागृत करने की जरूरत है. तो मेरा ये कहना है कि हम कोई ऐसी चीजें ओवर एंड अबव ना डिस्कस करें जो स्टूडेंट की समझ से बाहर हो जाए, उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाए सब्जेक्ट के प्रति,
तो हमें हर चीज को कोशिश करेंगे कि हम उसको सिंपल करें, उसको सिंपली उसको समझाने की कोशिश करें और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े। यही आज टीचिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये जो मुश्किल चीजें हैं, एक हल्की फुल्की चर्चा तो की जा सकती हैं और स्टूडेंट को कह दिया जाए कि ये बस एक जानकारी के लिए, एग्जाम में नहीं आएगा, वो डरे ना। ये साथ ये वाला जोक सुना। और देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है, आज लोग कई बार मुझसे ये चर्चा करते हैं, कभी जिन लोगों ने वर्कशॉप सुनी हो, मैं एक बड़ी बात कहा करता हूँ कि आज ये वक्त आ गया कि दोस्तों कि हमें अपने साथियों का, अपने मित्रों का, अपने स्टूडेंट्स का विश्वास जागृत करना है, उसके हौसले को बढ़ाना है। देखिए, मुझे याद है जब हम बच्चे होते थे, एक टीचर साहब पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा, पंजाब की बात है, मैं पंजाब का रहने वाला है, उन्हें पूछा, कहना काका, मैं कहा सारे पंजाबी समझ रहे होंगे, कहना काका 3 सत्ते, कहना 19, स्टूडेंट ने कहा 19, कहना भैया तकरीबन ठीक ही है। तो मेरे वगैरह से क्या मास्टर जी, ये 3 सत्ते 19 तुझी कहता तकरीबन ठीक है, कितना ठीक है? कहना मैं बच्चे की इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, कल 3 सत्ते 15 बोल रहा है, 19 पे पहुंच गया है। ये देखो, ये अपने आप ही तरक्की करेगा। तो इस माहौल के अंदर, क्लास के अंदर हंसी मजाक बहुत जरूरी है और हंसते हुए हर एक चीज हम समझाएं। मुश्किल नहीं बतानी, आसान आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? विश्वास जागृत कीजिए। हाँ जी, Very nice, sir. Thank you, sir. So let's take up the next question. Is revaluation of assets and reassessment of liabilities without changing the value in syllabus? So Khosla sir wants to take that question. ये मैं, हालांकि मेरे साथी की शिकायत था, मैंने शायद उनसे गुस्ताखी कर दी होगी, आदत से मैं मजबूर जैसे कई बार हो जाता है। अभी बैठे बैठे एक सवाल मेरे दिमाग में ऊपर आया, मैं इस सवाल का जवाब पहले दे दूंगा, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सवाल यह है कि रीवैल्यूएशन ऑफ हम एसेट करें और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी भी कर दें, लेकिन उसके बावजूद भी मुद्दा यह है कि बैलेंस शीट के अंदर वो अपनी पुरानी स्थितियों के अंदर दिखाई दे। निश्चित रूप से किया जा सकता है, हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यही तो पढ़ाने की कोशिश है, बस वही तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का कंसेप्ट निकला। आप करिए ना, क्यों नहीं कर सकते हैं? और स्टूडेंट को बताना चाहिए, और स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेपर में है क्वेश्चन एक ऐसा, तो विदाउट इसकी चेंज किए हुए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये सिद्धांत इन्होंने अपनाने की कोशिश किया है। ये तारीफ के बिल्कुल कंसेप्ट। देखिए, एमसीक्यू के अंदर बच्चे के दिमाग को भगाना है, उसके दिमाग को सुलाना नहीं। ग्रेवाल साहब का एक चुटकुला मैं ले रहा हूँ, वो कहते थे किशन लाल रामलाल को जगा दे, तो स्टूडेंट आगे से बोला था तुमने सुलाया, तुम ही जगा दो। ये इस माहौल के अंदर लोगों को जागृत करो। अब देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया आता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट शोज, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, मैं बल्कि और चेंज कर रहा हूं, इक्वालिटी ऑफ दी बोथ दी साइड्स ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। भारिया जी जरा ध्यान से सुनना, या अभी बैठे बैठे मेरा दिमाग जो बैठा है। Equality of revaluation account indicates there is no profit. ये रही सेकंड ऑप्शन आपके सामने, there is no loss. तीसरी ऑप्शन, neither profit nor loss. और चौथी, all of them. हाथी और शेर का टकराव हो गया। ये हाथी और शेर का टकराव है। बताइए कि एक ऐसी स्थिति की कल्पना करो ना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के दोनों साइड टोटल बराबर हैं। मारिया जी, शायद मेरे ख्याल आप भी, मेरे ख्याल पहली बार ये क्वेश्चन, पता नहीं मेरे तो दिमाग में भी आया, तो मैंने कहा यही क्यों ना पूछें। अच्छा, मैंने लोगों को जगाने की कोशिश की हमेशा। हम लोग, ग्रेवाल साहब, हम लोग कोशिश है कि वो कहते दीवाने परवाने अंताक्षरी के अंदर जगाना है ना। ये लाइक क्वेश्चन, इक्वालिटी ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इंडिकेट्स, देखिए क्या हाथी और शेर का टकराव है, और ऑप्शन में आपको बेस्ट चुननी है। ये रही ऑप्शन, देयर इज नो प्रॉफिट। सेकंड, देयर इज नो लॉस।
Neither profit nor loss. All of them. All of them. ये राज का जवाब आपके सामने. All of the above. ये तीनों के अंदर ही संभव है. सवाल तो एक ही था. तो मैं रीमा जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और मेरे अंदर से एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ था, मुझे मौका मिला. थैंक यू जी. Thank you, sir. और बहुत सुंदर से तरीके से आपको सवाल पूछते हैं. जस्ट ये है कि ये सिलेबस के अंदर है सुखबीर जी. हाँ जी. So next is memorandum balance sheet and syllabus. So Grewal sir might take that question. इसके ऊपर मैं थोड़ा आपको ना लास्ट ईयर जब सिलेबस रैशनलाइज हुआ था तो उसके में ले जाना चाहता हूँ. वहां पर सीबीएसई ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया था कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट सिलेबस में नहीं है, पर जो इस साल का रैशनलाइज सिलेबस आया उसमें इसका मेंशन नहीं है. सो इट इज नॉट क्लियर, बट देयर इज नो हार्म इन टीचिंग एक्स्ट्रा. व्हाई नॉट? If the question comes in the examination, student should be able to answer it. So I will say, even somebody of you may be of the view that it is not in the syllabus, still memorandum balance sheet should be shared with the students as well. Right, sir. Thank you. Arvinder sir wants to add something. Actually, in this case, in case of memorandum balance sheet, a simple accounting equation can be used, and there may be question related to MCQ. In that case, suppose partners' capitals are given, the amount of capital is given, and liabilities are given, and it has been mentioned that assets are revalued at this amount. It has been mentioned, and there are 4 options, and you have to tell the new value of assets, revised value of assets. In that case, on the basis of partners' capital and liabilities of the firm, it is required to be to calculate the amount of sundry asset using simple accounting equation, and then revised value is given. So that means what is the change in value, or if there is change given, what is the revised value? That maybe options are given in MCQs. There may be such kind of questions. So what is actually memorandum balance sheet? Simple calculation of missing information in balance sheet, and that may be at the time of admission also. That may be at the time of change in profit sharing ratio among existing partners, even in case of retirement of death of a partner. तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं करना. तो मेन है कि एसेट्स मिसिंग है तो एसेट्स कैलकुलेट कर लें, लाइबिलिटीज मिसिंग है तो वो कैलकुलेट कर लें, या कैपिटल्स मिसिंग है तो कई बार हमें वो भी कैलकुलेट करना होगा विद अ सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन. अभी हरविंदर जी एक बात कह रहे थे कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट जो है ये इक्वालिटी है, एसेट लायबिलिटी और कैपिटल की तो है, और उसके अंदर फिगर को एक फाइंड आउट करने की जरूरत है. अगर आप ये चर्चा में देखें जो इस बार जो सैंपल पेपर दिया है, हालांकि वहां भी हम डिस्कस करेंगे, मैंने अभी क्योंकि 3-4 सैंपल पेपर तैयार किए हैं तो खूब मौका मिला इनकी बात का समर्थन करने के लिए. अगर बड़े ध्यान से हम देखें, पहले जो वो सवाल हमसे पूछते थे वो हमसे उसका जवाब मांगते थे कि बताइए 4 फीचर के बाद जब रीच हुआ तो कैपिटल रिजर्व में क्या गया. अब वो भाई कहते हैं जवाब तुम्हें देंगे, सवाल तुमसे सजना पूछेंगे कि बताइए वो शेयर रीइश्यू किया तो किस प्राइस के ऊपर किया. बेहतरीन, जिसने ये पेपर में अंदर बेहतरीन, हम हमेशा कैपिटल रिजर्व, यानी वो ये क्वेश्चन पूछ के लोगों के अंदर दिमाग की जागृति को बढ़ाने की कोशिश. बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप भी शायद देखते होंगे कि बताइए वो रीइश्यू हुआ तो कितने का हुआ, अगर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये प्रॉफिट था तो बताइए बैलेंस शीट के अंदर रिवाइज एसेट की वैल्यू क्या थी. तो सर ये कैलकुलेशन की बुनियाद बहुत जरूरी है. सीधी रेशो आपको दी हो. हाँ, बस. Thank you, sir. Thank you. So next, let's ask Harvinder sir.
issue of debentures is in term 2, but redemption of debentures is not mentioned. Is this chapter deleted from syllabus? It has been mentioned in the syllabus that in the curriculum that methods of redemption are not in a part of syllabus. इसका मतलब है कि जो मेथड की बात हम लेके चलते हैं, लमसम मेथड है या ड्राइंग ऑफ लॉट मेथड है, दे आर नॉट इन द सिलेबस. दैट मींस रिडम्पशन से रिलेटेड वो टॉपिक जो है वो सिलेबस में नहीं है. लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब हम इश्यू ऑफ डिवेंचर डिस्कस करते हैं तो उसके साथ जब हम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू का टॉपिक डिस्कस करते हैं तो साथ में हम रिडम्पशन की एंट्रीज भी डिस्कस कर लें, ताकि ये पता हो कि कोई भी अकाउंट जो ओपन हुआ उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर उसको फ्यूचर में कैसे क्लोज किया जाएगा. तो एक सिंपल एंट्रीज जो है वो रिडम्पशन की हमें जरूर बतानी है एज लर्निंग आउटकम, लेकिन रिडम्पशन एक एज ए कंप्लीट टॉपिक हमें डिस्कस नहीं करना है. लमसम मेथड, ड्राइंग ऑफ लॉट मेथड, नॉट इवन डिवेंचर रिडम्पशन, रिजर्व एंड डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो भी टॉपिक जो है वो हमें डिस्कस यहाँ पर नहीं करना है. Right, sir. Thank you. So, the next question has been asked by many teachers, Sajit, Miss Shalini Arora, and Thara Gopal. So they have asked about projects. So we'll take this question with Gaurav sir. Project has been divided into two parts on the lines of main examination. Will a student have to prepare two project files separately for term 1 and 2? Please discuss this. As per the CBSE curriculum design, there is only one project. Only one specific project is to be made by the student, which you can divide in two parts. Half in term 1, half in term 2. The same project should be carried forward from term 1 to term 2. Now, which project we can take? Can I elaborate, ma'am? Yes, sir. Sure, please. The point is, from 2015. I think we must spend more time on projects because lot many teachers have the same thing. Yes. So let us spend some good time on this. Okay. If you go by 2015 guidelines, which was released by CBSE, and the latest guidelines are 2015 only. As per those guidelines in accountancy, there are 3 specific projects which a student can make, and any of 2 at that point of time could have been taken. Now it is 1. Those 3 are, number 1, segment analysis. Number 2 is cash flow analysis or cash flow statement analysis. And third was comparative study or comparison of net profit, revenue from operation, net profit ratio, and capital employed. And there was 3. Now, till date, many teachers are doing with ratios only. As a matter of extra knowledge, we can go with the ratios, but with CBSE guidelines, if we follow the CBSE guidelines, there are only 3 projects. I'm again repeating those 3: segment analysis, cash flow statement analysis, comparative study of revenue from operations, net profit ratio, and capital employed. So out of these 3, any one can be taken by the student. Now, if we are taking any one of these, suppose I'm taking cash flow statement analysis. Now, cash flow statement is a part of term 2 syllabus. How to go with term 1 syllabus? In term 1, project work is of 10 marks, which is divided again 3 parts. 6 marks written test, which is from ratio. 2 marks file, 2 marks viva. Again, a big round of applause for CBSE that they have clarified this year that the viva will be taken in term 1 out of ratios, and in term 2 out of cash flow statement and common size or comparative. Till date, it was not being mentioned in CBSE curriculum that viva should be taken from which part. Although indirectly it was given that viva should be taken from project file only. But many of us, when we go as an external, or many teachers when come to our school as an external, they even ask the question from class 11th concepts. But now in this term-wise syllabus and this project guidelines, CBSE has very much clarified that in term 1, the viva will be from ratios. In term 2, the viva will be from cash flow statement and comparative and common size statements. Now, if we are taking with cash flow statement analysis, if we want to go with CFS analysis with our students as a project work. Now, what are the steps in this? First, student has to select a company. They have to download their financial statements, annual reports.
They have to take the printout of the cash flow statement. They have to make a project file, write the basic requirements like index, certificate, acknowledgement, then write the theory of CFS. But since CFS is in term 2, so we can't expect our students to write a CFS theory in it. So what they can go for it, they can paste the cash flow statement in term 1, and that's it, the project file for term 1. That's it. In term 2, we can continue with this project file and then move on with the cash flow statement theory portion and analysis portion, which is expected in a project file in segment, specific. Now, as a matter of extra knowledge, because we have got many queries regarding, can a student go for ratios also? As a matter of extra knowledge, there is no harm in going for ratios. But to be very frank, CBSE has given the 3 projects, which I've already told you, ratio is not one of them. But as a matter of extra knowledge, what we can do in term 1, ratios can be calculated for 2 years. Certain ratios, not all the ratios, certain ratios can be calculated for both the years out of the financial statements. And those ratios which are being calculated for 2 years, a comparative study can be done. Like whether inventory turnover ratio, last year, how much it was, this currently how much it is, and then we can make a comparison that whether the inventory turnover ratio has improved or declined, and same with other ratios also. But if we are going in term 2, we cannot continue with this project. In that scenario, we have to make 2 projects with our students. One is ratios, which we are doing in term 1, but in term 2, we definitely have to go for either segment or cash flow analysis or the comparative study of revenue from operations, net profit and net profit ratio. That's it from my side. Anyone who wants to add? Thank you. So very सर एक बात देखें, जो आप रेशियो के अंदर कह रहे कि कैश फ्लो का, मैं एक बात कह रहा था कि पार्ट 1 के अंदर अगर दिखाया जाए, तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर स्टूडेंट को सिर्फ कैश फ्लो का थोड़ी बुनियादी एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करके कि इसका एग्रीगेट क्या होता है, चेंज इन कैश, पर इससे आगे कुछ नहीं, उसको बुनियाद बना के उसी आधार के ऊपर टीचर चाहे तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऊपर एक प्रोजेक्ट तैयार करना चाहे, तो क्या आपकी क्या राय है इसको? Sir, you're very right. We as a teacher, when we are teaching in class, it's very much sure that all of us teachers must be teaching some part of term 2 syllabus before term 1. Am I right, Ravinder sir? Yes. Because if we go by the timeline, term 1 is in the month of November, December. Suppose it goes till December 25th or so on. Now, after that, the term 2 is in the month of March, April. So how much time we have got? Just January and February. In those 2 months, we have to take pre-boards also. In those 2 months, there will be a project also where the external examiner will be coming for economics, accountancy, business studies, and maybe if the student is having physical education also. And this year, we have also heard that there will be external examiner for English also. So for January and February, just imagine the situation. And believe me, the students are so much fed up by sitting at home that they will ask you for the farewell party also. And even if they won't ask you, they will definitely have a farewell party of their own. So we don't have that much time. So as Khosla has said very rightly, if we can touch the theory portion of cash flow statement, then yes, in our project file, the term 1 project file, we can go with some theory portion of cash flow statement, which is a part of our project file. Thank you. I think looking at the timelines, November, December, we have term 1, and March, April, we have term 2. Time is very short to cover the entire syllabus that is there for term 2. So that means in term 1 itself, you will be covering certain topics of term 2 as well. Yes. So why not touch cash flow? बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई शक नहीं. So that's my view. Yes. One very important, another question is very frequently coming about the examiners. In the first term, whether there will be internal or external examiner, or in term 2, what will be the position? Gaurav, I think. What I have heard or what I came to know through the WhatsApp groups only, or through the information
which I have received till date, there will be no external examiner for term 1. It means term 1, practical exams will be internal based. But we have to keep all the evidences, my dear friends. Please keep an evidence for written test 6 marks, Viva also, and project file also. Project file, obviously there will be a evidence, but we have to keep an evidence for Viva also. And besides, Okay, it's clearly mentioned in one of the documents which Harvinder has just presented, midterm assessment by internal examiner, and the second part, final assessment and Viva by both internal and external examiner. It means term 1, there will be no external examiner, it's totally internal examiner. But again, humble request to all of us. I'm saying all of us because I'm also a teacher just like you. We have to keep an evidence for the project file, the project work and Viva also. Yes. I think, Gaurav, along with this, internal assessments also become important. Yes, sir. Or whether it relates to project or it doesn't relate to project. I agree, sir. Because if pandemic strikes again, and all the examinations are online, then internal assessments do carry weight in assessment of the student. So you have to keep those records. Even CBSE says, upload them onto the CBSE website. Thank you. Right. So continuing this only, a teacher, Mrs. Sutapa Bhattacharya. Sorry, sir, let me just complete this question. So Mrs. Sutapa Bhattacharya has asked that whether we can prepare a PPT format of project or we have to prepare a hard copy file only. So My option is yes, we can prepare a PPT project file. There is no harm in it. We can prepare. Even CBSE has given an option with PPT or PDF or a handwritten project file as we used to make. In fact, this is a departure from the earlier stand of CBSE, where earlier they wanted that everybody should handwrite the project. And this is the first time they have talked about PPTs, pie diagram, bar charts, all this. And this can only be done through computers. So extensive use of computers has been encouraged. Thank you. Thank you, sir. So one more related question. Ms. Pooja Kajal has asked, Ms. Pooja and Ms. Kajal have asked, if ratio analysis in term 1 for projects, should it also be prepared and shown in the project file? So Gaurav sir, if you want to take that up. Again, I'm repeating, ratio is not a part of our project guidelines given by CBSE. Ratio should not be a part of. Only 3 are there, that is segment analysis, cash flow statement analysis, and the comparative study of revenue from operations, net profit ratio. These are only 3. But yes, if you consider these 3, it can be a part of ratios. Then you don't have to calculate with the net profit, current ratio or debt equity ratio or other ratios. Just make a comparative study of revenue from operations, net profit, and net profit ratio. Grewal sir, I want to ask one thing from you, if you allow me, sir. Sir, as you said, internal assessments are very important nowadays. Should we, as a teacher, discuss the same with our students or should we not? Because in last year, when we came across the pandemic and all of a sudden CBSE has decided to scrap off the exams, the internal exams were being given weightage, not only of class 12th, but of 10th and 11th. But with now the current scenario, as CBSE has very much prepared well in advance and they have given 4 situations. Yes. And in situation number 3 and 4, the weightage for internal examination will be there, that whether both the exams will be online or term 1 is offline, term 2 is online, and the various examples are there, various competition are there. So as a teacher, should we discuss same situation with our students so that they give the relative importance to these internal exams? Yes, I think it is very, very important because we have to ensure that student remains very serious about the examination. That internal assessments are just not assessments by the school. It may carry some weight when the final assessment by CBSE is done. Because you see, the biggest issue that is arising, biggest challenge that is arising through the IT teaching is to make the student more serious about studies. And
more serious about the examination, more serious about the final outcome. And for sure, this year will not be the type of the year which we saw last year. No examinations, but this year examinations will definitely be held, whether online or offline. So internal assessments will carry, may carry, I will say, the weights in the final assessment. So we have to make sure that the student remains serious about it. Mr. Ojas has asked that if you're talking about segment analysis, can we take ratio in segment analysis? Can we prepare ratios and assess that in the projects? Mr. Ojas, if you can relate the ratios with segments, then you can go ahead with it, sir. Not an issue, not an harm. But again, keeping the fingers crossed that the external examiner coming to your school in term 2 accept that. Because if the external examiner objects to it, that ratio is not a part of project, then we might be in some difficult situation. Yes, sir. If we are talking about, Mr. Ojas, about segment reporting or segment analysis, I think without, if I am thinking correctly, segment analysis cannot be done without ratio analysis. Because what is segment? Out of the 3, 4, 5 segments of the company, we have to assess which segment is doing better. And the tool left with us is ratio analysis, because profitability, solvency, and other ratios, activity ratios. So, but then you see, you have to compare it for 2 years at least. Then only it will become an analytical tool. But can it not be compared segment wise, like one segment vis-a-vis other segment? Yes, you see, Same otherwise, year? you see now how much capital is invested in a particular segment, what return it is giving, whether the other segment is giving the same kind of return or not. So that only can be worked out through the ratios. And I always say that a very good balance sheet for this purpose is ITC, because they are into agriculture, they are into frozen food, they are into hotel, they are into cigarettes, and very many other things. So segment, to my mind, without ratios cannot be done. This is my view, Gaurav. So just now got an idea. As sir has said that can we discuss some portion of cash flow? So the idea is, can we go with comparative and common size in term 1, although it's a part of term 2? I totally understand. I totally agree with. But if we go with this chapter in term 1, which is a very simple chapter from teacher's point of view as well as from student's point of view. So if we go with this chapter in term 1 and can go with the project of segment analysis, because segment is nothing but based on ratios and common size. Yes. So if we go with this comparative and common size in term 1, which is a very simple chapter, hardly will take 3 to 4 classes, then we can go ahead with this segment analysis, and it will be an easier option for all of us rather than to go for cash flow statement analysis. This is just my humble suggestion to you all. I 100% agree with you, Gaurav. So just got an idea with your idea. इसके ऊपर अभी कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट के ऊपर भी इसके ऊपर प्रोजेक्ट तैयार करने में एक बहुत बड़ी बात ये रहेगी कि वो जो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का जो एक कंसेप्ट है और टाइम सीरीज एनालिसिस, जो आज के इन सैंपल पेपरों के अंदर बड़ा चर्चा का एक विषय रहा है, उसको समझाना बड़ा आसान होगा। और फिर हॉरिजेंटल और वर्टिकल एनालिसिस, एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस आपने तो डिस्कस करना ही है, तो क्यों ना इसके साथ साथ इसको डिस्कस कर लिया जाए। और उसके बेस के ऊपर अगर जो प्रोजेक्ट बनेगा, मेरा अपना व्यू है कि वो प्रोजेक्ट बेहतर होगा। अगर आप बनाते हैं तो आप स्टूडेंट को उससे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, इसका ट्रेंड एनालिसिस तो ठीक है, अभी पार्ट नहीं है सिलेबस का, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंटरफर्म, इंट्राफर्म एनालिसिस, ये सारे कंसेप्ट एक ही तीर से कई निशाने हो जाएंगे। बिल्कुल, कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा उससे स्टूडेंट के लिए, और वो
MCQ में भी उसके काम आ जाएगा। बिल्कुल सर। Gaurav, you have come out with a very brilliant idea. थैंक यू सर। कंपैरेटिव कॉमन साइज कराइए, साथ में सेगमेंट रिपोर्टिंग एंड रेशियो एनालिसिस हो गया। उसमें रेशियो एनालिसिस करेंगे तो हमारा जो टेस्ट होना है 6 मार्क्स रिटन टेस्ट, उसकी भी तैयारी साथ में होगी। बिल्कुल सर। So this answers Miss Akanksha Dave's question also. She's asking is it compulsory to include cash flow segment and comparative all three? So if this format is followed, then if not compulsorily, but it will be covered. Who has asked this question? Miss Akanksha Dave. Miss Akansha Dave, there is only one project to be done by the student, and out of these three, only one. CBSE has very much clarified in their curriculum that with effect from year 2021 onwards, there will be only one specific project. And out of these three, which option I have given already told you, in 2015 guidelines were being given. You can just Google it, download it. A student has to do only one project out of these three. Thank you. So let's move to the next. I think there was a good discussion on 15 minutes discussion on projects. It was very much required, sir. Yes, yes, and lot of queries were there. Hmm. We have just shortened down. Hmm. We have not taken all the names. And I'm sure very much that many queries will still be coming. Yeah, there are we many will more. answer. Some repetitive and some little different. We can probably take them up in the end when Sure. we've covered और the other एक parts. सिंपल सी बात मैं भी साथ में ये कहूँ कि जो प्रोजेक्ट वर्क की बात हम लोग कर रहे हैं, काफी कुछ डिस्कशन होगी कि भी इस टॉपिक पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, इस टॉपिक पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट ये बात ध्यान रखना है कि देयर विल बी ओनली वन प्रोजेक्ट। अगर उसको 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट विल बी कंडक्टेड इन टर्म 1 एंड सेकंड पार्ट विल बी कंडक्टेड इन टर्म 2। लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है कि भी देयर शुड बी क्लियर गाइडलाइंस टू स्टूडेंट्स व्हाट इज टू बी डन। और उसमें क्या है कि भी इसमें हम लोग ये बात लेकर चलते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नॉर्मली क्या होता है कि हम सिंपली डायरेक्टली बोलते हैं स्टूडेंट को कि आप ये कंपनी आप सेलेक्ट कर लें और इस कंपनी के बेसिस पर आप सेगमेंट रिपोर्टिंग आप लोग कर लें। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि कई कंपनीज में सेगमेंट्स नहीं होते हैं और वहां पर सेगमेंट एनालिसिस नहीं किया जा सकता। और हालांकि देखा जाए तो एक सेगमेंट और भी होता है जिसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल सेगमेंट्स। दैट मींस इफ द कंपनी इज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, सो दैट मींस इन दैट केस एक कंट्री का जो सेगमेंट है तो उसको भी एक सेपरेट सेगमेंट की फॉर्म में लिया जाता है, वहां पर कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, अगर दूसरी कंट्री में तो वहां पर भी कैसा परफॉर्म कर रही है, कई बार उसका भी कंपैरिजन किया जाता है। तो बेटर नॉट टू टेक जियोग्राफिकल सेगमेंट्स, लेकिन जो आपकी मेन कंपनीज हैं जिसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट FMCG कंपनीज हैं, उनके कंपनीज को सिलेक्ट किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। अगर हम सेगमेंट कर रहे हैं और उसके अलावा अगर हम वो ठीक है कि हम लोग ये बात काम कर रहे हैं कि जो सिलेबस का जो टाइम है टर्म 2 का वो बहुत कम होगा, बट डेफिनेटली काफी टीचर्स होंगे जिन्होंने टर्म 1 में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो वो अब दोबारा उसको नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिलेबस को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें बेटर होगा कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही कंटिन्यू किया जाए, चाहे उसमें आप कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, दैट वोंट टेक मच टाइम। और उसके लिए अगर आप चाहें डेटा डाउनलोड करना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रोजेक्ट के लिए जो एनुअल रिपोर्ट है वो आप डाउनलोड करें। और इसमें बेटर ये रहेगा कि कंपनीज जो हैं वो टीचर्स सेलेक्ट करके स्टूडेंट को दें कि ये जो इन कंपनीज का प्रोजेक्ट है जो कि आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ इट कि भी आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनी का डेटा लेना है और कौन सी कंपनी का नहीं लेना है। और अगर वो डाउनलोड कर भी रहा है तो यहाँ पर ये भी इसका पार्ट है कि हमें डिसाइड करना है whether to continue with this data or not to be continued. That means teachers have to verify that this project is to be continued. Right. Thank you, sir. So very healthy discussion, I must say. Yes. many much more required. questions. Many more questions have come on projects. So We'll take them up we'll take it later. up. Yeah, We'll we'll take take them up later. So one basic question, which I'm sure now almost everybody is aware, that our assertion reasoning based MCQs and case study based MCQs in accountancy also. Ms. Jayalakshmi has asked this question. So, sir, Harvinder sir, would you take that question? I think that is very much clear from a sample paper released by CBSE.
और उसमें अगर आप देखोगे कि जो 6 क्वेश्चंस आई थिंक दैट दीज आर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस और 2 केस बेस्ड स्टडीज है जिसके बेसिस पर टोटल 5 क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर एक जो है वो फंडामेंटल में से है और एक कंपनी अकाउंट यानी अकाउंटिंग फॉर शेयर्स में से है। तो केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ सिलेबस। जहां पर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की बात मैं कहूंगा तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो असर्शन और रीजंस हैं यानी जो एक स्टेटमेंट गिवन है उसके साथ जो रीजन गिवन है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए स्टूडेंट्स की स्मार्टनेस चाहिए। अब जैसे अगर एक एग्जांपल लें कि नॉर्मली क्या होता है कि भाई जब हम एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इवन इन एनी ऑफ द एमसीक्यू हम वहां पर इनकरेक्ट आंसर को एलिमिनेट करें। अगर आप सीबीएसई का जो सैंपल पेपर उन्होंने रिलीज किया है, अगर आप उसको क्लियर देखेंगे तो वहां पर काफी क्वेश्चंस आपको ऐसे नजर आएंगे कि जहां पर आप एक सेंटेंस पढ़ते ही किसी आंसर को आप एलिमिनेट कर पाए। जैसे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है तो असर्शन रीजन यानी असर्शन की जो स्टेटमेंट है वो ध्यान से आप पढ़नी है। इफ यू फाइंड द असर्शन इज कंप्लीटली करेक्ट और उसके साथ रीजन आप जरूर पढ़ लें, आप उसको असर्शन के बेसिस पर अगर आपको लगता है कि असर्शन इज करेक्ट, सो दैट मीन्स जिन जिन आंसर्स में असर्शन इज रॉन्ग ये मेंशन किया हुआ है वो आंसर आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स असर्शन जो करेक्ट है वो आंसर आप पिक करेंगे और उसके बाद फिर आप रीजन में से ये देखना होगा कि वेदर रीजन इज करेक्ट और रीजन इज इनकरेक्ट, और वहां पर 2 पॉइंट आ जाएंगे कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो वहां पर यह कि एलिमिनेशन का पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि उसमें जल्दी से स्टूडेंट जो आंसर कर पाए। तो आपका जो क्वेश्चन था वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस आर द पार्ट ऑफ syllabus or will be the part of question paper. Thank you, sir. Mr. Khosla wants to add something on this. ये assertion and reason बेस्ड जो क्वेश्चन है इसके 5 तरीके हैं। 5 तरीकों से एक ही क्वेश्चन को आप देखिए आपके सामने 5 तरीकों से आ रहे हैं। पहला होगा असर्शन एंड रीजन, बोथ आर करेक्ट, और रीजन जो असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है। फर्स्ट ये देखिए एक ही क्वेश्चन अब चल रहा है, मैं दूसरे क्वेश्चन पे नहीं आऊंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। एक ये असर्शन है, स्टेटमेंट है पहला। दूसरा उसका रीजन दे रहा है, इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरी 5 ऑप्शंस खुली हुई हैं। पहले मैं कहता हूं ए और आर बोथ आर करेक्ट एंड आर जो है ए को प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है। दूसरे में कहता हूं ये दोनों करेक्ट हैं लेकिन आर ए को प्रॉपरली नहीं सपोर्ट कर रहा। तीसरे में कहता हूं ए करेक्ट है लेकिन आर गलत है। चौथे में कहता हूं आपका आर ठीक है ए गलत है, और 5वां कहता हूं ये दोनों ही गलत है। ये 5 विकल्प हैं। देयर आर 5 ऑप्शंस। असर्शन और रीजन और कुछ नहीं है, लेकिन इसकी बुनियाद सिर्फ अकाउंटिंग की थ्योरी है। ये एमसीक्यू में भी काम आएगा, केस बेस्ड के अंदर भी काम आएगा। अब पहली बात कि इंटरेस्ट पेड टू इसी क्वेश्चन को देखिए, मैं 5 तरीके से कह रहा हूं। इंटरेस्ट पेड टू ए पार्टनर इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। यस, दिस इज करेक्ट। रीजन, सो इट शुड बी डेबिटेड टू द P&L अकाउंट। कोई संदेह नहीं है, ये पहला ठीक है। अब देख रहा हूं दूसरे में लिखूंगा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और रीजन में देख रहा हूं इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उड़ गया, रीजन में चला गया। हालांकि रीजन को कहीं पर भी नहीं टिकता। और दूसरा एक देखिए, अब दोनों ही गलत हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ इज एन एप्रोप्रिएशन, और साथ ही नीचे लिख रहा हूं सो इट शुड बी डेबिटेड टू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दोनों ही गलत हो गए। तो आपको इन क्वेश्चनों को तैयार करते टाइम या क्लास में स्टूडेंट को समझाते टाइम एक ही क्वेश्चन को एमसीक्यू के एंगल से भी बता दें, एक ही क्वेश्चन को असर्शन और रीजन के हिसाब से भी बता दें, और हर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दें।
Perfect. मेरा एक इसमें थोड़ा सा रीमा, if you allow Yeah, me. sure. अब तो पेपर है MCQ बेस्ड, चाहे वो MCQ प्योर MCQ है या असर्शन रीजन बेस्ड MCQ, जब तक स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं होंगे, उसके लिए ये आंसर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। हालांकि मेरे डिक्शनरी में डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, पर थोड़ी सी परेशानी होगी उसको। तो हमें जो अपना स्ट्रेस रखना है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन के ऊपर, एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन वी आर डिस्कसिंग थ्योरी एज वेल एज द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल से जो क्लैरिटी आएगी थ्योरी की, वो वैसे नहीं आ पाएगी। दूसरी बात, खोसला जी ने बार बार बीच में यूज किया A and R. What I feel कि student should be encouraged to write assertion and reason. Bracket में बेशक A and R लिख दे। So this is what I feel. We have become very used to using abbreviations. पर abbreviations अगर examiner को समझ ही नहीं आया, ये तो MCQ based है, यहाँ तो clear हो जाएगा, पर किसी जब अगर टर्म 2 के अंदर नॉर्मल एग्जाम हो अगर, तो वहां पर एब्रीविएशन यूज कर लिया और एग्जामिनर को नहीं समझ आया, तो सो आई थिंक वी शुड बी अवॉइडिंग सच थिंग्स। थैंक यू सर। हरविंदर सर, एक्चुअली जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं ना कि, और इस यहाँ पर जो करंट हम लोग डिस्कशन ये कर रहे हैं कि भी किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस की बात हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सैंपल पेपर को भी ध्यान से देखें तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक इसमें है सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड MCQ, यानी सिंपल MCQs हैं जो थ्योरी बेस्ड है। दूसरा न्यूमेरिकल बेस्ड MCQ, जिसमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शंस गिवन है, वहां पर उसका आंसर देना है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि जहां पर मैच द फॉलोइंग, यानी 4 ऑप्शन गिवन है, 4 आइटम्स गिवन है, उसके साथ सामने 4 आइटम्स गिवन, तो आपने उसको मैच करना है। अब वहां पर क्या है कि किसको किसके साथ मैच किया जाएगा, इसके आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगी एंड यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट वन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जाएगा करेक्ट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, in case of dissolution of partnership firm, what is the correct sequence of payment according to section 48 of partnership act? तो जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आपका सिक्योर्ड लाइबिलिटीज है, अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज है, पार्टनर्स लोन है, पार्टनर्स कैपिटल्स हैं, तो वहां पर आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है वो मेंशन करनी है, तो वो क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन जो है वो 5th टाइप का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो जैसे आप देखोगे सैंपल पेपर में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, 2 ब्लैंक गिवन है, उसके बेस पर आपने आंसर करना है, तो फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन भी उसके साथ है। और एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो गया 7th टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हो सकते हैं। तो हर टॉपिक में से हमें वो क्वेश्चंस निकालने होंगे जिसमें हम 7 टाइप के क्वेश्चंस जो है वो क्रिएट कर पाए। हर टाइप के क्वेश्चंस जब हम डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस उनका इंप्रूव होगा। थैंक यू सर। सीक्वेंस के अंदर एक क्वेश्चन जैसे इन्होंने पूछा है, ये देखिए, अब इसको सीक्वेंस के अंदर लाने की कोशिश है। एप्रोप्रिएशन, चार्ज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ये फंडामेंटल का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अभी बैठा है, सोचा गया चार्ज, एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखे, 2 क्वेश्चन बने। Right, sir. So we'll quickly take up the next questions. We are running short of time. So should class 11 examination also be taken term wise based on MCQs like we are doing in class 12? So Harvinder sir, would you take that, please? Actually, I think in term 1 and term 2 for 11th class, I feel there should be combination because अगर हम MCQs की बात करेंगे तो MCQs जो आपके, अगर आपके इंटरनल एग्जाम्स हैं, अगर आप खुद क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, देयर शुड बी प्रोपोर्शन। कुछ पोर्शन अगर हम MCQs ले पाएं और कुछ पोर्शन जो है आपका डिस्क्रिप्टिव हो यानी सब्जेक्टिव,
क्योंकि स्टूडेंट्स को राइटिंग प्रैक्टिस और यहाँ पर ही है जो स्टूडेंट सीख पाता है कि भाई इसमें प्रेजेंटेशन किस तरीके से हो, जर्नल एंट्रीज की प्रेजेंटेशन, लेजर अकाउंट्स की प्रेजेंटेशन, तो वो क्वेश्चन हम कुछ पार्ट क्रिएट कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन कैन बी मेड 75% MCQs and 25% subjective questions, or 60% and 40% or 50% 50%. If that is in your hand, that means आप टर्म 1 का सिलेबस पेपर खुद सेट कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. क्योंकि कल का आप ये बात देखें कि जो सेकंड टर्म है, क्योंकि जो 12th क्लास में इस टाइम पे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 11th क्लास में भी पेपर दिए हैं, चाहे ऑनलाइन दिए हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर दिए हैं. लेकिन 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अभी तक कोई भी एग्जाम मेरे ख्याल से अभी अगर लिया होगा तो यूनिट टेस्ट लिए होंगे या साइकिल टेस्ट होंगे, उसमें प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा. लेकिन टर्म 1 में एटलीस्ट हमें ये जरूर करना चाहिए कि सब्जेक्टिव पार्ट भी साथ में लेकर चलें. बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट. Right, sir. So I'll ask the next question to Gaurav sir. He also has to add something. He can add it there. So, sir, a lot of queries have come which ask about the marks allocation, because there are 45 questions for 40 marks. So how does CBSE see it as? How do they plan to Through work a that out? circular given on CBSE website, CBSE has very much clarified it that it will be on proportionate basis. It means, suppose in accountancy I'm taking, a student has to attempt 45 questions. So out of 45, if a student scores 36, it will be proportionately reduced to 40 marks. So out of 40, it will be 32. That's a pro rata basis marks. So whatever he or she scores out of 45 will be converted into out of 40. This is the first thing. Now, a good thing for the students. The good thing is, if by making proportionate marks, if a student scores, let us suppose out of 40, he scores 36.1, it will be converted to the higher figure, that is 37. So this is a good thing for the students. If the proportionate thing, and this is very much clearly given on the CBSE website, a circular is there on CBSE's website, so you can very well refer to it. Right. So a clarity has been given by CBSE. Rima, if you just allow me to ask, add on the point which he has asked. As the question was there that should we go with the same thing in class 11 or not? So my humble suggestion is, God forbids, if this pandemic continues, God forbid, sir. Now, if we go with class 12th, which happened in 2020-21, the marks were taken on the basis of 10th, 11th, and 12th, just because of it happens all of a sudden. Now, this year CBSE is very much prepared that if the 12th marks, the current batch, if the pandemic continues, that they will take the internal assessment. If this pandemic continues, I'm very much sure that if this pandemic continues next year also, then the board students appearing in 2022-23 board students, their 11th class marks will be counted. Yes. And in that scenario, a school has to give internal marks which they have scored in class 11, and their school has to justify that why they haven't taken the internal exams in term 1 and term 2 separately. So my humble submission is, go with the same thing as the CBSE has given. And yes, as Havindas has said, that few chapters or few topics of term 1 can be assessed in term 2 also, just to give them extra clarity. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Just to और conclude, एक चीज मैं यहाँ पे साथ में और ऐड करूंगा कि इंटरनल असेसमेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शन दी है कि जो भी आपकी इंटरनल असेसमेंट है उसके मार्क्स आप सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करें. तो इसलिए वो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इंटरनल असेसमेंट है. Yes. That is what I said in the beginning, somewhere in the beginning, why internal assessments are very important. we are receiving many queries as to what sir already answered, that if a student scores maybe 34 point something, it will be rounded off to 35, next higher rounded figure. Right. That's a moderation. Basically, every question will carry 0.89 marks. Yes. Right. And then it will be downsized. But if we go with 0.88, then a student has to calculate different points in different exams. If a 70 marks paper is there, it will be different criteria. Right. And the best part is that for accountancy is different, for mathematics is different. BSc is more different. 0.8 is there. So be ready for different combinations. Yes. So next question would be for sir.
companies collect entire money on application. Still, why do we teach entries for allotment and calls for feature, reissue, etc.? Yes, this question has been answered by me many times. You see, yes, that's practically nowadays most of the company, I'm not saying all the companies, most of the companies, they do take the entire issue price along with the application. But there are cases where they have taken it in installments. And the very recent was Reliance Industries right issue. In that right issue, they took the issue price in installments. And you see, law cannot be rigid. Law has to be flexible. So they give power, they give right to the companies to decide whether they want to take the entire money upfront or they want to take it in installments. So that way, because legal provision is there, it has to be, considered. Also, I must bring to your notice that public issues nowadays, they are not by transferring the amount, they are ASBA based. So money will remain in your account under lien by the bank. And if the shares are allotted to the applicant, only then the amount of relating to the allotted shares will get transferred from his or her bank account to the company's account. So accounting should take ASBA into consideration. So I hope this is just a suggestion to the authorities that they introduce ASBA based accounting also. It will become much simpler too. Thank you, Rima. But in that scenario, there will be no refund of application money. No refund of application money. Even you see, application money always will be equal to the share subscribed. Yes. Yes. So there will be no refund adjustment against the allotment. Right. So, sir, next question is how many portion will be asked? How much portion will be asked from chapter 2 of AFS, the book? Is it restricted only up to objectives, importance, and limitations? Mr. Hirendra Soni has asked this question. So, Gaurav sir, can you please take this up? There is no deletion as far as this chapter is concerned. I hope you are asking for with chapter 2 is concerned. Yeah, chapter 2, that is analysis of financial statement. Yes. There is no deletion from this chapter. It means all the things which we used to teach till date are still in syllabus, are still we have to teach and can be assessed by CBSE. Everything is there. Types of analysis, types of comparative studies, intra-firm, inter-firm, security, everything is there in the syllabus. Right. And one more thing is that if you see, you have seen the chapters only. If you see the detailed curriculum, it has been mentioned over there, financial statement analysis, meaning, objectives, and limitations. That is very much there. Right. Right. So next is a question about application, minimum application money. So I request Grewal sir to take it up. What should be the minimum application money? SEBI prescribes minimum 25% of face value and Companies Act prescribes in a different manner. Thank you, Rima. I don't know the name of the teacher colleague. And you see, when we look at the questions, जब हम questions देखते हैं जो CBSE के papers में आए, they are all relating to issue of shares to the public. And when it is issue of shares to the public, along with the Companies Act, SEBI provisions have also to be looked into. Companies Act says, section 39(2), that application money should not be less than 5% of the nominal value of the share. Not less than. And SEBI also says minimum 25%. So that means a company can call for at least 25%, should call, because it is a public issue. Also, if we look at table F, which is the Articles of Association, there's a maximum call can be 25% of the nominal value.
So they are very conflicting provisions. And table F is the article of association of the company. उसको कंपनी अपने हिसाब से चेंज भी कर सकती है. इट्स अगर वो क्लॉज अपने में डाल दे कि हम 50% लेंगे तो 50% माना जाएगा क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो जब हम बात करते हैं पब्लिक इशू की तो सभी प्रोविजंस को हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए. अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कई क्वेश्चन में तो नहीं है कि मिनिमम 25%, कम भी हो जाता है. तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अमाउंट पैसों में नहीं आए. सपोज 2.50 हो जाए तो स्टूडेंट की कैलकुलेशन में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी. वैसे ही कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है. एक हमारे टीचर कोलीग की सजेशन आया हुआ है कि जी कैलकुलेटर्स अलाउ होने चाहिए, तो पर नहीं है अलाउड तो नहीं अलाउड. दैट इज द कंस्ट्रेंट ऑफ द एग्जामिनेशन. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कभी ये हो जाता है कि भाई 25% से कम की एप्लीकेशन मनी हो गई या कॉल मनी हो गई. तो दैट इज द रीजन. You wanted to add something? Gaurav sir wants to So add something. can we say in this scenario that whatever there is given in the Companies Act or SEBI, minimum application money, is only for the sake of reference for the students, just for sake of theoretical knowledge? Because in the board papers, we have seen application money of ₹2 also, even 3 also. So if the student, for example, if I take a case of minimum subscription, like next question is there, I totally understand. If a student gets confused in this, if the company has not received minimum subscription, suppose the company is invited for 50,000 shares and public has applied for 40,000 shares, minimum subscription 90% is not received. Now the student gets confused and he goes out of the way and says, no, the company cannot go for the issue. But the question is saying all the shares were applied for, all the shares were issued by the company. So these two things, that is minimum subscription and minimum application money, should be taught to the students only for the sake of reference, only for the sake of theoretical concept, not as a matter of practical scenario. Is it so? Gaurav, I will go a step further. I think when person is setting a paper, question is being framed, he or she should be aware about the provisions of the SEBI. Yes. So when 90%, Gaurav will take up that question, if minimum subscription is not received, then shares cannot be allotted. So accordingly, the question should be framed in such a manner that minimum subscription is received, although it's a case of under subscription. Like Gaurav took the example of 50,000 shares issued. A question can be that 45,000 shares were subscribed. So I think it is for the paper setter or the, to decide, you see, that all the legal provisions are complied with. Yes. Or there is a, clarification by the CBSE in the syllabus itself that SEBI rules are to be ignored. Yes, it should be. Then it becomes simpler. Yes. Because both rules are contravening to each other in many aspects. Yes. Because you see, Companies Act says that board of directors can decide minimum subscription. Yes. SEBI says 90%. 90%. यार मैं तो आपका क्वेश्चन ले लिया. तो SEBI says 90%. अगर हम किसको माने, तो बोर्ड को एटलीस्ट अगर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन द केस ऑफ पब्लिक इशू, इफ दे हैव टू डिसाइड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो दे हैव टू डिसाइड व्हिच इज एनीवेयर फ्रॉम 90% to 100%. Yes. They cannot decide for lower than 90%. But in my opinion, what I think is SEBI says 90% only for the IPO. Is it so? Yeah. And the Companies Act, that is that directors can decide, it's for IPO as well as FPO for all the issues. So it means Even SEBI says for all issues. All issues. Being MCQs, if the provisions, the question is not according to provisions, student can very well select none of the above. yes. You're given a very good chance to take a question. Now, how question should be framed? That is also a skill. Somebody shared a WhatsApp with me. Teacher asked a student, how will you spell crocodile? And student said, Krokdile. How will you? And the teacher said, no, it's wrong. The student says, yes, okay, it may be wrong, but you asked me, how will I spell? So I will spell it this way.
So questions should be framed in a manner that they are not opinion based. There, how is crocodile? What are the spelling of crocodile? So that is the right framing of question. The student may very well say my life, my rules. Yes, because you see, we are given option to the student. How will you do it? जैसे हम पूछ लेते हैं, how will you show reserve, say securities minimum reserve in the balance sheet? How will you show? वो कहता है जी मैं तो इसको non-current liabilities में show कर दूंगा. Right. So he cannot be taken as wrong. So what I do with my students is I give one question. A company invited applications for 50,000 shares. Public has applied for 40,000 shares. Can the company go for allotment of shares? Then pass entries. Then they will do two entries. One application is received and second is one. The next very question I give in this way. Company invited applications for 50,000 shares. Public applied for 40,000 shares. All the shares have been issued and received except call money on these shares. And then I ask my students, although it's logically, legally wrong, company cannot go with the issue. But if the question is saying you have to, then you have to. You can't go against with this. आप यहाँ नहीं सोचेंगे कि whether we should go with the issue or not. Whether the company has not received minimum subscription, so whether the company should go with it or not. Sir, अब यही question आ जाता है कि profit and loss appropriation account में loss के case में बनाना है या नहीं बनाना. Sir, here I remember. नहीं, question में ये लिखा होता है कि prepare profit and loss appropriation account. So student has no choice. For इस साल तो वो खैर नहीं आएगा. And here I remember one case, sir, if you remember, revenue from operations and returns from revenue from operations. If you still remember that case. Although till date, I still teach my students that if the revenue from operations given and sales return is given, don't subtract. But if revenue from operations given and returns from revenue from operations given, subtract it. I still ask my student to do this, sir. मैं आपसे यहाँ पर I must share with everyone कि Schedule 3 क्या है? Schedule 3 है presentations of these transactions in a summarized manner. हमारी accounting नहीं बदली. Accounting हमारी वही है. हम accounts में आज भी sale को credit करेंगे, sales return को debit करेंगे. But when we are showing it in the statement of profit and loss, then it is revenue from operation, which is net. That is sales minus sales return. तो Schedule 3 में confuse नहीं होना, वो हमारी presentation है और accounting जो है वो हमारी normal accounting है. मैं भी ये डिस्कशन सुन रहा था. एक मेरी अपनी राय है, तो जो मैं जर्नली कई बार लोगों को देखता है, कई बार लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर कमी निकालने की कोशिश करते हैं. देखिए एमसीक्यू के अंदर आपको बेस्ट चुनना है. आपको लगते हैं गलत है, लेकिन उनमें से कोई तो एक ठीक है ना. कि जी मुझे तो ये लगता ही नहीं. अब मान लो एप्लीकेशन 2 रुपए आई है, मैं तो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जी उसने तो कहा 25% है. सर दुनिया भर के क्वेश्चन सेट हुए हैं, तो क्या वो गलत थे? उस समय मेरी स्टूडेंट से तो यही है कि बेटे मौका दे और आगे बढ़ जा. सवाल के अंदर कमी मत दे. ऑप्शन जो चारों में से गलत है, उन्हें जो ठीक लगती है उसको चुन लो. वो तो उसके पास चॉइस ही नहीं है. चॉइस 4 में से उसने एक चूज करनी है. वही है ना, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है. चैलेंज नहीं. काटे ना उसी को एक ही गलत. अगर उसमें लिखा हो none of the above, वो तो एक अलग तब ठीक. वो एक अलग बात आ गई. तो बात क्या Controversy तो है ना कि नहीं है. So many teacher colleagues have also asked, sir, whether some material would be available to practice questions for teachers and students, apart from A to accountancy. A to accountancy तो आ ही रही है. It is almost ready, and Khosla ji has worked very hard on the MTPs. And इसके अलावा बहुत सारी I think websites भी आ रही हैं जिसके ऊपर बहुत सारे practice questions होंगे. हम भी लेके आ रहे हैं. So keep watch on it. रीमा जी बात थोड़ा बीच में मैं कह रहा हूँ. एंड 8 टू अकाउंटेंसी के अंदर ये तो डिसीजन तो लोग निर्णायक तो पढ़ने वाले होंगे कि कैसा है, लेकिन क्वेश्चन उसके अंदर कई बहुत सोचने वाले हैं.
Sir, हालांकि स्टूडेंट mix ही होना चाहिए sir. मिक्स है, हर को रखा है, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, एक बिल्कुल बिलो सर। एवरेज को भी रखा है, एक और थोड़ा उठाया भी है, बिल्कुल तो सर. उसमें कोशिश यही की गई है। और बहुत सारे क्वेश्चंस का नंबर्स बहुत है, बहुत ज्यादा है। So we'll take up questions very quickly. I'll repeat. I will not call out the ones that are repetitive of what we've already discussed. So teachers have asked whether we can skip forfeiture of shares for term 1. Whether we can skip forfeiture of shares for term 1. नहीं कर सकते हैं, नहीं कर ये सकते कैसे हो सकते हैं? देखिए, और फीचर को कैसे कर देंगे? हमारे सभी के विचार में, आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल सिटिंग हियर, इस सिलेक्टिव स्टडी मत एनकरेज करें, क्योंकि अगर एग्जाम में सपोज करो उस कंपनी अकाउंट्स में से उसने 7 क्वेश्चन देने हैं तो 7 के साथ 4 फीचर के दे दे, तो स्टूडेंट क्या करेगा? दैट मीन्स 18 में से 15 करने, वो 11 ही कर लेगा जो पार्टनरशिप के होंगे. So selective study, in our view, and I think all of us agree on this. So that reminds me, year 2018, sir. Before that year, whenever student comes to us, there were many students who comes to us in January, February. Sir, मैं पूरा साल नहीं पढ़ा, मुझे please कुछ topics so important. And as a teacher, the first topic which we tell to our student is comparative and common size. कि बता ये कर ले 4 नंबर पक्के हैं. That was the year sir जब बोर्ड में आया ही नहीं था. And then we realized कि it was 2015 also जब वो पेपर में क्वेश्चन नहीं आया था. But in that year क्या था? Comparative was given to us and ratio was asked, net profit ratio was asked. But realize नहीं किया कभी कि even this cannot be. तो selective study बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. मैं इसके पीछे आपको मैं रीजन देता हूँ. When I was there in the paper design and syllabus committee of CBSE, we made a change. अगर आपको याद हो, एक समय में आता था हर चैप्टर के अंदर से नंबर होते थे. बिल्कुल. तो सारे चैप्टर्स को क्लब किया गया, तो पार्टनरशिप जैसे कर दी थी 30 मार्क्स. उसके पीछे रीजन ही यही था कि बच्चे को हमने सिलेक्टिव स्टडी से दूर करना है. अगर सपोज करो पहले क्या होता था कि अपना डिसोल्यूशन का चैप्टर छोड़ दिया, पर नो क्योंकि उनको पता था इसमें से इतने नंबर का ही पेपर आना है. पर अब नहीं, अब तो पूरा सिलेबस हमें करना है. ये हाउ कैन वी इमेजिन, यू सी, अगर हम देखें हमारी आर्मी, इफ दे फाइट द पाकिस्तान फोर्सेस, विल दे गो विदाउट एम्यूनेशन टू फाइट? नो. सो व्हाट इज द एम्यूनेशन फॉर द स्टूडेंट? उसका सिलेबस पूरा होना चाहिए. सो आवर अर्नेस्ट रिक्वेस्ट इज टू एवरीवन दैट डू नॉट एनकरेज सिलेक्टिव स्टडी प्लीज. क्योंकि हमारी जो जब स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे होंगे ना, तो हम ही एकदम से चौड़े होके चलेंगे, यस हमारे स्टूडेंट ने देखो कितना अच्छा किया. सो फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर देम थॉरली. Anyways, I think choices are there. Student can always select what they want to एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ. मुझे नहीं पता इनका ये क्वेश्चन था कि कंपनी में 4 फीचर ऑफ शेयर्स को क्या हम छोड़ सकते हैं. अगर ये आप 4 फीचर ऑफ शेयर को छोड़ते तो फिर रीइश्यू भी खत्म हो गया. रीइश्यू खत्म हुआ तो कैपिटल रिजर्व भी खत्म हो गया, कंपनी की बुनियाद खत्म हो गई. यानी देखिए तीनों चीजों की बहुत जरूरी है. तो मैं हम लोग बिल्कुल इससे एग्री हैं, ये नहीं होना चाहिए. और जहां तक सिलेक्टिव स्टडीज की बात है, जो टीचर्स काफी टाइम से इस फील्ड में हैं, उनको कभी याद होगा कि पार्टनरशिप का जो लॉन्ग क्वेश्चन है कभी 12 मार्क्स में आता था. और वो 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन था उसमें नॉर्मली होता था कि जो चॉइस थी उसमें एडमिशन रिटायरमेंट, एडमिशन डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट डिसोल्यूशन, इस तरीके से होता था. तो नॉर्मली स्टूडेंट्स ये बात पूछते थे कि क्या रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का जो टॉपिक है उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता था कि सर लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को छोड़ दें, क्योंकि एडमिशन या डिसोल्यूशन में से एक टॉपिक तो मिल ही जाएगा. और एक साल मुझे याद है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें जो चॉइस थी, एक क्वेश्चन रिटायरमेंट का था और दूसरा क्वेश्चन डेथ का था, 12 मार्क्स का. तो इसका मतलब है कि सिलेक्टिव स्टडीज जो हैं अगर की जाएंगी तो कई बार वो जो नुकसान डेफिनेटली. फंडामेंटल बोर्ड में 1 मार्क का भी आया हुआ है, और वेरी नेक्स्ट ईयर फंडामेंटल आल्सो केम फॉर 12 to 13 मार्क्स. 8 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम फंडामेंटल वाज देयर. So sir, this is one chapter में से क्वेश्चन है. टीचर कोलीग बिराज बानिक
I pronounced it right, sir. Would you please explain why loose tools are included in current assets while calculating working capital, but the same is excluded from current assets while calculating current ratio? So, sir, you want to take it? मैं बताऊंगा, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है. जिस समय हम करंट रेशियो को व्हाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो हम करंट एसेट के अंदर देखते हैं कि क्या एक रियलाइजेबल है. लूज टूल कभी बिकने नहीं है वहां, इसलिए उसको छोड़ देते हैं. लेकिन जब हम वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लूज टूल सर्टेनली वर्किंग कैपिटल का एक करंट एसेट का पार्ट कंसीडर किया जाता है. और लूज टूल्स है क्या? यू सी देयर कैन बी डाइस. अगर हमसे वाटर बॉटल हम बना रहे हैं, वाटर बॉटल ये बनानी है वाटर बॉटल, तो इसके लिए डाई बनेगी शेप देने की, तो दैट इज लूज टूल. और ये लूज टूल में एक और चीज ऐड कर दूं, ये डेप्रिशिएट नहीं होती, ये हर साल इसको रीवैल्यू किया जाता है. जो वैल्यू में डिफरेंस आएगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ करते हैं. सो वर्किंग कैपिटल का दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ इट. So, next question, Shaista Begum has asked, capital adjustment is deleted from partnership. So at the time of admission of a partner, new partner's capital account should be debited for goodwill premium not brought in instead of its current account. Want me to repeat? ऐसा है कि CBSE एक्सेप्ट करता है कि इन ऑल केसेस करंट अकाउंट के थ्रू आप गुडविल की एडजस्टमेंट करते हो. हालांकि प्रिंसिपली मे बी ऑल ऑफ अस डू नॉट एग्री टू दिस ट्रीटमेंट, पर ठीक है, CBSE एक्सेप्ट कर रहा है तो वी कैन डू दैट. अब कैपिटल एडजस्टमेंट अगर हटा भी दिया है तो हम स्टिल, आई थिंक वी शुड स्टिल कंटिन्यू यूजिंग करंट अकाउंट. जो आपने कहा वो भी बिल्कुल ठीक है कि जब कैपिटल एडजस्टमेंट ही नहीं है तो गुडविल की एडजस्टमेंट भी कैपिटल के अकाउंट के थ्रू भी कर दी जाए. दैट इज परफेक्टली ऑलराइट. We'll take some questions that we've received. हाँ जी प्लीज. I'll quickly yeah. So, Miss Shikha Garg has asked, please tell about class 11 depreciation chapter also. I think this was in the context of the discussion that we were doing. That yes, and some chapters from asset disposal account. Yes. What I feel is sale of asset must be taught, can be assessed with the students, because sale of asset is very important element of that chapter. What me and Harvinder sir have already discussed earlier, that what we think that instead of writing the asset disposal account is not in syllabus, it was written wrongly as disposal of asset has been deleted or whatever. So it should be asset disposal, which we think, sir. So yes, we have to teach the sale of asset with the full determination as we used to, and it is very much important for class 12th information. That is when we are teaching cash flow statement. Yes, agree with you. Absolutely. Thank you. So, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मत डालिए एसेट डिस्पोजल के ऊपर, बट पढ़ा जरूर दीजिए. So, teachers have asked that how should Viva be recorded? How can Viva be recorded? For you see, when it is held online, Viva is held online, so you can use the Zoom platform. Then there is an option. And you can record it. But and if it is happening offline also, we can take the help of English teachers, those who are doing assessment and listening, speaking skills. They used to record it. With the help of some instrument, they used to record it. Even same we can do with our smartphones. We can easily record it. Sir. Many options are available. Many options are there. So, please clarify whether for written test, question should be objective or subjective. This is for the practical, Your project internal. Yes. Hereby, CBSE has not given any instructions to us. It's totally dependent upon us whether we want to go with objective paper or subjective paper. What I will do, or what I will suggest you, go with the subjective, at least to give them a 6-mark good practice with ratios in term 1 and 6-mark good practice in cash flow or comparative common size in term 2. This is my humble submission. Yes.
It should be. So this is an interesting one. This is Miss Ritu Dhaman has asked, there are 18 questions in part 1, section A, and student is supposed to answer only 15. What if the student answers all 18 questions? Then how will they be evaluated? Just simply first 15 will be checked and finished? Or how would it go about? No, you see, this is just like the same way if a student does both the option questions, where the choice is given, if a student does both the choices and the best marks are taken. So if a student does 18 questions and all 18 are correct, फिर तो कोई dispute ही नहीं रहा. तो 15 क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे उसको. उसको वैसे 15 में से 15 ठीक करना है. 15 में से 15 ठीक करना है. 18 में से 15 ठीक हो गए then also. तब भी सेम ही है. मतलब लेकिन मेन चीज है ना कि यहाँ पर अगर CBSE एट द टाइम ऑफ पेपर चेकिंग क्या इंस्ट्रक्शन देती है, दैट डिपेंड्स. तो वो क्योंकि देखो एज अ रूल हम लोग स्कूल के जब एग्जाम लेते हैं तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि जो पहले अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस हैं उनको हम करेक्ट कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम रिपीटेड मेंशन कर देते हैं. लेकिन CBSE में जैसे आपको पता है कि भी अभी तक ये था कि अगर चॉइस वाले क्वेश्चन अगर स्टूडेंट कर लेता है तो जिसमें बेस्ट मार्क्स हो उसको वो अलॉट किए जाते हैं. बट यू नेवर नो कि इन दिस सिचुएशन CBSE की इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जामिनर्स के लिए क्या होती है, दैट डिपेंड्स. तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए रिस्क पर मत रखना उनको कि वो सारे अटेम्प्ट कर लें, और उसमें क्या होगा कि भी लास्ट के 3 क्वेश्चंस जो है वो CBSE उसको हटा दे और स्टार्टिंग के जो 15 क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पर मार्किंग की जाए. It would also depend on the software which is used for checking the OMR. Computerized checking is there, so yes. कंप्यूटराइज्ड चेकिंग होगी तो उसमें सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करेगा. So that depends upon CBSE. Right, thank you. I think we are broadly done with all the questions. Yeah, we've broadly taken up the entire thing. I'm sorry if I missed out any. You can please share it over email. I attempted to take all the important ones. One question. My Priyanka ji. Yes. Do we need to do NCERT also? प्रैक्टिस तो जितनी कर सकते हो जरूर करो, और कॉन्सेप्ट बेस्ड है सारा पेपर ही इस बार, क्योंकि MCQs हैं तो concepts have to be very very clear. Absolutely. Right. So I think with this we can. एक और चीज है, सैंपल पेपर के अंदर बड़ा क्लियरली CBSE ने कहा है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो स्टूडेंट को कहिए जितने अटेम्प्ट करने हैं 18 में से 15 तो जरूर करके आए. जहां उसको आंसर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं कर पा रहा असेस, तो मेक द बेस्ट रीजनेबल एस्टिमेट और उसके बेसिस के ऊपर आंसर करे. और नहीं आंसर करेगा तब भी 0 है. अगर अटेम्प्ट करके 0 आ जाए तो ठीक है. सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसलिए क्वेश्चंस नहीं छोड़ के है, पूरे क्वेश्चंस करने हैं 45 के 45. Right. Anything and we'll end it. So thank you everyone. We've come to a close now. We've taken almost all the queries, and whatever is left, please you may email it to us, and we will get back to you on those. So thank you. Thank you all of you. All the best. Happy Teachers Day. Belated Happy Oh Teachers yes, Day. happy Teachers And Day. thank you, Grewal sir, for the wonderful gift. It means a lot to me, sir. Nice, sir. You have achieved such a, I mean, your achievement is great. Sir, this achievement is much more than that, sir. When I'm sitting with you and sharing the platform with you, sir. This is much more achievement, sir, for us. Best